और बताओ गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया? So before we start this video, hi guys, welcome back to my channel. My name is Johan Rai. So आज आपके लिए कुछ different वीडियो लेके आया हूँ. So before I start this video, I know ये वीडियो बहुत लंबा है. I had an option to cut this video and make it in 2 parts, but टाइम तो उतना ही लगेगा आपको देखने में, so एक ही पार्ट में मैंने बना दिया. And for this video, I tried my best to gather people from every state and every area. So जितने मेरे contact में थे, I tried to contact them and make a video. What is up? Guys, my name is James and I'm from Manipur, and right now I'm in Delhi. Hi, this is Tunkula. Hello, this is Marina Lepcha and I am from Kalimpong, Pedong. Okay. Hello guys, my name is Yamini. Hi guys, my name is Swati and we are from Delhi. First, my name is Kelson Sherpa और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ. Hi, this is me Lakshmi from Sikkim. Hello everyone, this is Aisha from Ambuchiachi State, Kurseong, Darjeeling. Hi everybody, I'm Priyanka. Hello, my name is Upashna. I'm from Darjeeling. So today I'm making this video on a special request from a not so close friend John Rai. Not so close friend John Rai. Not so close friend John Rai. So today we're gonna do Q&A. Guys, it's freaking hot right here. अरे मेरे face पे focus करो, face पे. Alright, so I'll have to go inside my room and film there. अरे यार रुक यार, इतना घूम क्यों रहा है? अरे, alright guys, so I'll get you inside my room. My introduction first for like last 8 years or 9. मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली वो ड्यूरिंग लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले ही दार्जिलिंग वापस गए थे, तो दे आर स्ट्रक देयर, आई एम स्ट्रक हियर अलोन. आई शुड हैव एंजॉयड इट बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एंजॉयिंग इट टू द फुल. Anyways, on to with the questions. जितने लोग भी इस वीडियो में हैं, उनके Instagram, उनके YouTube चैनल का लिंक will be on the description. You can go and check their channel. You can subscribe to them as well. And I had sent some questions to my friends. So, what are the few things you're liking and not liking about this lockdown? First thing that I'm liking about this lockdown is I'm getting plenty of me time, and you know I'm a person who requires me time to actually function properly. So if I do not get me time, I cannot function. My brain dysfunctions. Okay, so yeah, I'm getting a lot of me time and I'm doing plenty of skincare, and that's making me happy that I'm able to spend time with my family. These are the things that I'm really liking about this lockdown. And the things that I'm not liking is I'm not able to meet my friends, hang out with them, sit and talk over a cup of chai. So yeah, I'm missing all those. Yeah. अच्छा, मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं, अब तक तो कुछ नहीं. मुझे भी कुछ नहीं सच में. We are getting time to spend with our family members. अनि किनभने प्रायः हामी कतिजना काम गर्छौँ है, कतिजना पढ्दैछ र प्रायः हामी बाहिर नै हुन्छौँ है, अनि हामीले आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पाउँदैनौँ है. बट आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु स्पेन्ड विथ आवर फ्यामिली मेम्बर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर वेल है. अनि एबाउट डिसलाइकको कुरा गर्दा चाहिँ आई थिङ्क फर मी इट इज एक्सटेन्डिङ लङ्गर है देन आई एभर थट है. तर पनि यो हाम्रो लागि नै हो, हाम्रो सेफ्टीको लागि हो, त्यसै कारण वी सुड रेस्पेक्ट एन्ड ओबे द रुल्स है. I'm liking to sleep, play PUBG, and I'm not liking anything. Oh, of course, cooking every day. I like this endless time, like there is no restriction, there is no time limit for this lockdown. So the one thing I dislike is that I cannot go outside whenever I wish to. Like I cannot go to my nearby bakery and have a cup of tea over there or meet my friends or have some chit chat. Nothing like that. I'm completely restricted. Yeah, sure. I dislike this restriction. Liking Majay, I'm getting time to spend more time with my family. On the dislike Majay, I'm not being able to go outside, meet my friends. That's it. I'm not liking anything, but I came to realize कि हाँ मैं अकेला survive कर सकता हूँ. मतलब कभी कभी तुम्हें लगता है कि क्या तुम अकेले रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, क्या सिचुएशन होगा, है ना. But I feel that मैं अब I can survive. I knew how to cook, I never did that. तो वो भी बाकी चीज़ें भी, managing home expense and other stuff. तो yeah,
pretty survivable. I like that pollution has gone down. Things I'm not liking, not going out, hanging out with my friends. मतलब यार मुझे लगता था कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ मुझे अब फील हो रहा है, बिकॉज आई एम डाइंग टू गो आउट एंड मीट माई फ्रेंड्स, लेकिन अभी वो किया नहीं जा सकता, घर के अंदर लॉक्ड है. कोई नहीं, चलता है ना. कभी कभार दूसरों के लिए, खुद के लिए ज़रूरी है. And the only thing I'm liking about the lockdown is the fresh air and clear sky. वही देखो blue sky दिख रहा है. So the things that I'm liking the most about this lockdown is जति नि environment लाई अनि wildlife लाई यसले benefit गरिरहेछ हैन. And another thing is you gotta spend your quality time with your family, with your loved ones. अनि सबसे भन्दा खास चाहिँ आफूलाई पनि हैन एकदमै आफ्नो अब quality time spend गर्नु पाइरहेछ आफ्नो लागि पनि. So dislike चाहिँ भन्नु मिल्दैन, तर फनी वेमा भन्नु भने चाहिँ घरमा एकदम नौकरनी खालको टाइपको भइरहेछ मेरो है. अहिले जिन्दगी चलिरहेछ, खाना बनाउनु, लुगा धुनु, भाडा मोल्नु, यसमै जिन्दगी गइरहेको छ. अहिले दिनहरू त्यसरी नै बितिरहेको छ. गभर्मेन्टले जे नि गरिरहेछ त्यो हाम्रो बेटरमेन्टको लागि गरिरहेछ हैन. एन्ड इन्स्टेड अफ disliking, I think we all should appreciate that जे नि भइरहेछ भनेर हैन, लकडाउन भयो भनेर, बिकज हाम्रो लागि भइरहेछ जे पनि. Did you learn any new skills in this lockdown period? नहीं. हाँ, पत्ते खेलना सिर्फ सीखा ही नहीं, सिखाया भी है. अपने पापा को सिखाया, मुझे भी वैसे भी सिखाया है. हम रात भर क्या खेलते हैं? पत्ते. Nothing. और ये हमारे देश के युवाओं का हाल है. Skills, no. Unfortunately not. I'm actually brushing my old skills, like I used to sing, but due to certain reasons I actually stopped singing, and that's why I've taken this time to brush that, and I again started singing practices, and then yoga, which I had stopped, and then I again started those, and cooking as well. So yeah, I'm doing a lot of things, but nothing new. All of that are my old skills. Yes, I have learned to bake a cake and cook a donut, of course dalgona coffee, and of course to make dream catchers. Okay, so कुकिङ स्किल अलिकति राम्रो भइरहेछ. इम्प्रुभ त भन्दिनँ, बट या सिक्दैछ. अनि अर्को चाहिँ आम डुइङ वर्कआउट होइन, एक्सर्साइजहरू भइरहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ. Any new skills? Yeah. I had a talent in cooking, and I have acquired some skills in cooking with my mom. Like I made a biryani yesterday with my mom. I helped her. Of course, she helped me in acquiring the skills, and yeah, like making up the dinner. Yeah, so cooking skills have been increased or sharpened. अनि न्यू स्किल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई लिभ इन बस्ती है. सो आई एम लर्निङ हाउ टु ग्रो अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स है. सच बोलूं कि झूठ? ओके, सो आई लव रीडिंग. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन, किसी भी काइंड ऑफ. तो वो रीडिंग की हैबिट थोड़ी छूट गई थी विद जॉब एंड अदर स्टफ. आई वोंट से छूट गई थी पूरी तरीके से, बट दिन में आधा 1 घंटे से ज़्यादा मिलता नहीं था. लॉकडाउन में आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. मैंने अपनी 2 किताबें ख़त्म कर दी, एंड राइट नाउ आई एम ऑन अदर बुक. आई विल शो यू गाइस, एंड दिस इज दिस. इट्स नॉट दैट popular. I have just started. It's good though. Apart from that, I am I won't say I'm learning, but YouTube में देख के थोड़ा बहुत I'm trying to see if I can learn a little bit of Japanese, क्योंकि मेरे को जापान जाने का मन है, I guess. What was the funniest thing you have done so far in this lockdown period? It's embarrassing, guys. I'm sorry. हाँ, किया है. Wait. देखना चाहते हो? हमने जीता जागता कोरोना वायरस बनाया है और उसको गोद भी लिया है. ओ मेरा बच्चा कोरोना. ओ भाई, इतनी फालतू की चीजें कर कैसे लेती हो तुम? दिमाग से भाई. Just sleeping. I don't know whether it can be called funniest, but what I did was, you can actually check out my Instagram. I had posted an IGTV. On that I actually danced like a madman at 3 in the morning, because I was so frustrated
this lockdown, and it was, you know, in the earlier, just when it started. So, you know, I was so frustrated, and, you know, I don't know, but I just danced like a madman, and then I posted it on my Insta, on, you know, my IGTV. There's a funny incident or funny thing or Funniest thing I have done so far. The most funniest thing, if I remember, is like towards the end of March, like everything went upside down. Like I used to wake up at 2 p.m. in the afternoon. I had my breakfast as lunch, and everything was tilted. I used to sleep again during the evening hours, wake up again at the night, have a dinner, and stay all night watching web series and films, and go to sleep by early morning. So everything was flip-flop. Like I used to go to sleep in the morning and wake up at night. So that's the funniest thing I have ever done, man. यार फनीस्ट थिंग तो लाइफ में अभी कोरोना वायरस ही चल रहा है, अगर देखा जाए तो उसके अलावा कुछ फनी है नहीं। एम्बैरेसिंग एक है, वियर्ड एक्सपेरिमेंट वाली बात। घर में पनीर पड़ा था फ्रीजर में, ठीक है, एंड आई थॉट कि वो पनीर थोड़ा पुराना हो गया था 20-25 दिन, बट फ्रीजर में था, एंड आई थिंक यू ऑल नो कि पनीर की 45 डेज की एक्सपायरी होती है, सो प्लीज नो जजिंग, ठीक है। तो पनीर पड़ा था, आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग विद इट। तो निकाला, डीप फ्रीज किया, जैसे चॉप किया, यू नो, ऑयल और प्याज टमाटर में सॉटे किया उसको, एंड बोला चलो मैगी में मिक्स कर देते हैं। कर दिया, खाया, स्वाद आया, आई एम नॉट किडिंग, स्वाद आया। थोड़ा सा मक्खन भी डालो मैगी में एट द टाइम जब तुम पनीर डालोगे तो स्वाद बढ़िया हो जाता है। इट वॉज गुड, इट वॉज डिलीशियस। सो खाया, इट वॉज गुड, एंड आई गॉट फूड पॉइजनिंग। मम्मी पापा को मत बोलो ये वीडियो में, तो ऐड ही मत करो इफ पॉसिबल। सो आई हैड फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट, एंड शिटी, दैट वाज शिटी। I didn't have to go anywhere, but that was shitty. Yep. Like literally shitty. क्रेजिएस्ट थिङ चाहिँ अहिलेसम्म मैले केही पनि गरेको छैन हो यो लकडाउनमा। म क्रेजी टाइपको फनिएस्ट टाइपको मान्छे नै छुइनँ होला सायद, त्यसै कारण होला होइन। Funniest thing पनि भन्दिनँ, but you know, I tried to make this recipe, and I tried this recipe. First चाहिँ एउटा लाफिङ थियो, which turns out well राम्रै थियो, त्यतिको पिरो भएर सबै वेस्ट भयो होइन, जसमा चाहिँ मैले डरलाग्दो कराई खाएँ घरबाट। एन्ड सेकेन्ड थिङ चाहिँ जुलाबी बनाएको थिएँ। जुलाबीको बारेमा चाहिँ आइम नट गोना से अ लट, बिकज आई नो माई नट सो क्लोज फ्रेन्ड, माई नट सो डियर फ्रेन्ड जनले चाहिँ यहाँनिर एडिट गर्नेवाला छ मेरो जुलाबीको पिक्चर भनेर। जुलाबी बनाएको थिएँ, सो you know, the picture says all about it, so मैले केही भन्नु पर्दैन। Which food item or any dish you're missing right now? दार्जिलिङमा चाहिँ फेमस इज बडीको आलु एन्ड भोलाको आलु, सो दोज थिङ्स आर दि ओन्ली थिङ द्याट आइम मिसिङ राइट नाउ। आलु घरमा बनिन्छ कि, बट नट त्यस्तो टाइपको। खानु मन परेको चाहिँ पोक चिल्ली मोमो चाहिँ एभी खानु मन परिरहेको छ आफ्टर दिस लकडाउन होइन। आफ्टर दिस लकडाउन चाहिँ पक्का खाने हो होइन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ पोक चिल्ली मोमो चाहिँ पक्का खाने हो। मोमो, चाउमिन, किम्पाप, रामेन, छोले भटुरे, छोले कुलचे, रसगुल्ले, रसमलाई, पिज्जा, बर्गर, कुलचे, लाडू, मैं सब कुछ मिस कर रही हूँ। समोसा। तो आप अपना टाइम पास कैसे करते हो? मेरे को टाइम पास है, मेरे को टाइम पास है। देखना चाहोगे? टाइम पास। Why are you moving it, Taruka? just do. Pani puri, burger, momo chili, laughing, all the junk food. It has to be momos. I love momos. I mean, I tried making momos in my own house as well, but they turned out to be pretty tasty, but not it couldn't be compared to the ones that I eat outside, because junk has a different feel, you know, it gives you a different feel, it transports you to a different place and all those, yeah. So I'm missing momos. Food items that I miss. I really miss the South Indian cuisines, like dosa, idli, especially those meals that stand up on hotels. God, I really miss those stuffs. KFC obviously, and chicken biryani एकदमै ज्यादा मैले मिस गरिरहेको छु, जुन चाहिँ अब यु नो
बाहिर सिलगढीमा मुस्लिमहरूले बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब घरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मिल्दैन सो त्यो दुइटा चाहिँ एकदमै ज्यादा मिस गरिरहेको छु How's this lockdown is affecting your city area? Like what problems you're facing regarding grocery? Are there any type of price increasement in the same product? Like now it is not on that same price. So इस वीडियो में जितने भी आप बाहर के शॉट्स देखने वाले I did not force them to go out. For these video I had to wait for 2 or 3 weeks. उसके बाद जाके मुझे ये वीडियोस मिले because जब उनके घर में सामान ख़त्म हुआ था तो तभी वो बाहर गए and they shot this video. So this is the answer for question number 5. तरफ भी है so it's all empty right now. हमारा एक हॉस्पिटल है. Alright guys, so let's go back. काफ़ी सुनसान है, खाली खाली सा रास्ता है. दूध की दुकान खुली है. संगम क्या है नंबर 1? अरे 2 थाली दे दी 22 वाली. दूध 22 की है और यहाँ कुत्तों की रात हो रखी है. To be honest, people are cooperating quite well with the situation in my area, and so far everything is at peace. This search मलाई केही थाहा छैन because I'm not doing any grocery at all. Because I don't know because I don't do any groceries shoppings. So lockdown, it has been actually it's going pretty well in my area because the area is like there are people, they do not step out that often, and groceries, what we do is there is the sabji wala bhaiya who goes and we take all the vegetables which are required and then we keep it outside for 24 hours and then we put that inside our house, so we let it rest for 24 hours outside because for all these germs and things. And about the grocery, mostly we get it from a shop which is just 2 houses. We just have to cross 2 houses and there's a grocery store, so all those we bring if there is some essentials required, or else we have stacked up most of the things in our own houses, so it's not required. Like in our area also, people, they do not step out quite often because everybody has stacked all those things in there. First of all, I would like to share about this lockdown है. अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ जग्गामा पिसै छ, यस्तो अब बेसिक केसेसहरू सुनेको छैन है. अहिले हालैमा चाहिँ वी आर सेफ भनौँ है. अनि कतिवटा कुरामा ग्रोसरिज आइटम्सतिर प्राइसेस आर इन्क्रिजिङ है, तर पनि अब यो सब हाम्रो लागि हो है. यो टाइममा चाहिँ हामीले एकअर्कासँग बाजेर झगडा गरेर चाहिँ होइन, तर हामीले we should understand the situation and Problems in locality for prices? Yeah, sure. Like my mom usually goes for buying food items and all that stuff, and thank God with this all this vegetable stuff and dairy products are being delivered to our doorstep. But the thing is that they have raised the standard prices. Like usually 7 to 8 rupees are increased for each product. So this is one of the problems we are facing over here because every standard prices are being increased at the rate of 7 or 8 rupees. हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन के टाइम पे shops are open from 11 to 3 and it's almost 11 and I was actually going out for grocery and stuff. Many things मैं पहले ही Grofar से मंगा चुका हूँ. Grofar is working, so thank you Grofar, I guess. काफ़ी बाहर जाना बचाता है आपका, लेकिन वही है bread, दूध and eggs वगैरह, you have to get it. Eggs by the way इस बार Grofar से आए थे. In any case scenario, तो let's go outside. थोड़ा बाहर का दिख भी जाएगा and आगे की बात होगी. This is my outside जाने के लिए outfit. Mask, I don't know why I feel like wearing glasses when I go out. Headphones to listen to music, and now I'm heading outside, so see you. This is the outer street मेरे कॉलोनी से, and as you can see काफ़ी खाली है. वही ग्रोसरी ज़्यादा सेट 11 बजे खुलता है, तो ग्रोसरी के लिए जो भी है. This is Spencer, जो as you can see काफ़ी हद तक full है, which is good actually, right? ये सेक्शन थोड़ा खाली है, तो दाल essentials but कोई नहीं, I can make do. मैं पहले मंगा चुका हूँ. हाहा, happy Grofers.
So I got the stuff that I need. दूध, ब्रेड एंड नॉर्मल चीज़ें. आगे जो लाइन लगी हुई है वो स्पेंसर के लिए है, पीछे मदर डेयरी, और बाकी यू कैन सी काफ़ी खाली है यार. लेकिन हलचल ज़्यादा है लास्ट टाइम जब मैं आता उसके कंपैरेटिवली. यप, चलो साइनिंग आउट, गोइंग बैक होम. एज यू कैन सी इवन मेरी कॉलोनी भी खाली है, ज़्यादा लोग नहीं घूम रहे. जो खरीदे थे एसेंशियल्स वो सारे खरीद लिए. दूध, ब्रेड, अंडा, मैगी इज़ एन एसेंशियल जब तुम्हें खाना पकाने का मन ना हो, राइट. और वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो था. अभी मेरे सामने एक भाई ने 3 पैकेट मैगी लेके, लाइक 3 पैकेट ऑफ दैट 6 into वाला. सो मैगी इज़ समथिंग टू स्टॉक. प्राइजेस में इफेक्ट मैंने देखा है वेजिटेबल्स में. जो चीज़ें MRP पे बिक रही है वो तो मुझे ध्यान नहीं, बट वेजिटेबल्स में स्पाइक आया है. आलू, प्याज, टमाटर के दाम में तो स्पेशली स्पाइक है. वो महंगी हुई है 10-15 रुपये किलो के हिसाब से. बट आई थिंक जस्टिफाइबल है जैसे लोग उसको होल्ड करके रखते हैं. तो आई डोंट नो ब्लेम करना चाहिए कि नहीं, बट आई बिलीव कि जस्टिफाइड है. आई मीन पीछे पैसा पहुंचना चाहिए फार्मर्स को, राइट. अफेक्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाइक सबैजनाले अहिले अलि नअलि कोही न कोहीले सबैजनाले नै अलिक त प्रब्लम फेस गरि नै रहेको छ. बट त्यस्तो आई थिङ्क मेजर इस्यु चाहिँ मैले देखेको छैन. बिकज फुड आइटम्सको भनौँ भने यहाँनिर मेरो आफ्नै बडाको ग्रोसरी छ जहाँबाट मेरो गाउँको मान्छेहरू चाहिँ मेरो ठिक मैले भन्नु पऱ्यो गाउँको मान्छेको बारेमा भन्नु भने चाहिँ सबैजनाले त्यहाँबाट लिँदैछ. एन्ड प्लस गभर्मेन्ट इज प्रोभाइडिङ रासन्स अल्सो. अनि फेरि कतिवटा एनजिओहरू पनि आएर यहाँनिर सब्जीहरू केहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ. सो त्यस्तो केही अहिलेसम्म मैले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ देखेको छुइनँ. मेजर इस्यु चाहिँ देखेको छुइनँ मैले गाउँमा चाहिँ. मेरो गाउँमा चाहिँ फुड आइटम्सको जुन लाइक इन्क्रिजमेन्ट, प्राइसको इन्क्रिजमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि मैले केही थाहा पाएको छैन. बिकज मेरो आफ्नै मैले भनिहालेँ बडाको दोकान छ अनि हामी पनि रासन त्यहीँबाट गर्छ. सो त्यस्तो केही छैन, इन्क्रिजमेन्टहरू त्यस्तो केही छैन. सबै ठिकै नै छ अहिलेसम्म चाहिँ. एन्ड मेरो नजरमा 1 सेकेन्ड म मेरो गाउँ देखाउँछु है. खोइ त यसमा ड्याम सन यसमा गाउँ उयो हुने नै रहेन. Okay, this is my village. What was the craziest rumor you've heard so far in social media in this lockdown period? Is this being caused by 5G towers? Yes. Sabotage against cell towers in England, in the Netherlands? In countries without 5G, they've been blaming it on 5G. Where did that come from? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? One of the most funniest rumor I heard so far was the alcohol thing. If you take alcohol twice in a day, you won't get affected with the virus. अच्छा तुम्हारे यहाँ पे कुछ र्यूमर फैली है इस लॉकडाउन में? हाँ यार फैली तो थी. क्या चाय पीने से कोरोना होगा? Social media. There was a rumor I heard that there is one positive case in Sikkim, but it was not. Craziest rumor I have, if I remember, like towards the end of March, there were some rumors that the general elections of next Indian Lok Sabha has to be postponed and BJP has to continue to rule the government due to this coronavirus pandemic. And this is one of the wildest and craziest thing I've ever heard. It was a rumor, of course it was a rumor, but the thing is that people are dying or scared about death toll about this coronavirus, novel coronavirus. And people and some general citizens are still scared about BJP government being thrown out. Oh my god, this is one of the craziest rumors I have ever heard. क्रेजियस्ट रुमर चाहिँ सोसियल मिडियामा सुनेको भनेको चाहिँ नर्थ कोरियाको प्रेसिडेन्ट नै होइन चाहिँ लाइक मर्यो भनेको सुनेको थियो. अब जुन चाहिँ आई डोन्ट नो कति % ट्रु हो कति % होइन होइन. त आई थिङ्क रुमर नै होला त्यो. सो द्याट्स द क्रेजियस्ट रुमर द्याट आइभ हर्ड. I've heard a lot of things, yeah. I mean, one thing that I heard was this lockdown strategy that Modi ji was following was, first mentioned by WHO, and all this 21 days. First there'll be a Janta curfew, and then 21 days lockdown, and then again 3 days gap, and then again 15 days lockdown. Something like this, sort of. So that was the craziest rumor that I've heard. I mean, it had no evidence that it actually is.
the truth, but people were following it like I don't know what, how people they can follow these things so quickly, and they are just like I don't know. So yeah, that's the craziest rumor that I've heard in social media. और इस लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसी चीजें जो आप कंटिन्यूअसली करना चाहती हो? हाँ, और जाते हैं दोस्तों के साथ खेलेंगे, सबको सिखाएंगे, कॉलेज में जाएंगे. Of course, PUBG. Recently after the lockdown, I've been reading the Bible more and I've been praying quite often. So I am going to continue that even after the lockdown. So well, that's what I'm gonna take away from the lockdown. I'll continue reading and I'll continue working on my Japanese. Obviously मेरो वर्कआउट गर्नेछु म, अनि मेरो वर्कआउट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु, अरू केही नगरे नि. I'll continue my yoga, I'll continue with my song, and I'll try to spend more time with my family even when I start working. So yeah, these are the things that I'll try. Just work from home. That's exciting me because for the first 2 weeks it was really hectic to work from home. Oh man, you gotta be kidding. But things are good because when you're with your family and you can work from home, that's good. That's pretty great. So I wish this routine can be continued after lockdown. And after this lockdown gets over, what is the first thing that you're going to do? After this lockdown, first of all, I would like to go church for thanking God because He's saving us, He's still saving us and protecting us from this disease. किनभने अहिलेसम्म हामीलाई यस्तो डरलाग्दो डिजिजले केही भएको छैन है. त्यसै कारण हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले we should remember the God किनभने He can cure us He can save us, He can protect us Of course, I'm going to go to my work, of course. बात करूँगा man, I'm going to meet you guys. तेरे से सैम्यूल बच्चा जो अपना है. But we don't want to meet you, bro. बात करूँगा man, I'm going to meet you guys. पुरा घुम्ने हो, साथीहरूलाई भेट्ने हो, घुम्ने हो, आलुदम खाने हो, अन्त त्यति. First and the foremost thing is I'll go and eat. Yeah, come on. I need junk for my system. थोड़ा सा junk नहीं होने से I feel like my system starts dysfunctioning. So no, I need junk. So yeah, the first thing that I'm gonna do is I'm gonna go out straight to a nearby momo dukan and I'm gonna eat lots and lots of momos. Then my soul will be purified. Yeah, so that's what I'm gonna do. After this lockdown gets over, the first thing I'm gonna do is I'm gonna go straight to Siliguri to meet my best friend. She's pregnant and I just wanna be there by her side even for a few days. अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ केएफसी जाने हो, जाइका जाने हो, दबाएर खाने हो. अनि थर्ड थिङ इज हाम्रो जुनै पनि मेरो कलेजको फ्रेन्ड्सहरूसँग प्लान भएर चाहिँ अस्तिदेखि पिकनिक जाने भनेर. सो इफ द थिङ्स गेट बेटर देन सबै अब राम्रो भयो भने चाहिँ पिकनिक जाने थर्ड थिङ, एन्ड द फोर्थ थिङ चाहिँ सपिङ गर्ने अलिअलि त्यति. As soon as possible is just go for a ride with my friends. That's one thing I like to wish. Is there any message you want to give to the people who's watching our video? Stay home, stay safe. अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले, थाली ना बजाएं बाहर निकल के, और बाहर जाके आग पकड़ के ना घूमें. And what else? अगर टास्क मिलता है तो अच्छे से करें, कायदे में रह के, घर से बाहर निकल के नहीं. जब अगली बार बिग बॉस टास्क देंगे तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना. That's it. All I want to say is stay safe, stay at home. So far, I'm seeing people are attacking health workers, doctors, police. I think it is not the good thing they are doing. They are risking their life to save us. So we should respect them. We should salute them. We should pray for them. अनि आउने दिनमा अझै उनीहरूले यस्तो राम्रो कामहरू गरेर अगाडि बढ्न सकोस् न कि उनीहरूले आफ्नो यस्तो उनीहरूले मेहनत गरेर पनि अब हामीले उनीहरूलाई अप्रिसिएट गरेनौँ भने उनीहरूलाई पनि नराम्रो लाग्छ है. And we should respect them. अनि lastly I would like to give thanks to Joan. Thank you तिमीलाई यो चान्स दिएकोमा to share about few things about our places अनि keep shining अनि and for the people who are watching this I would like to say change is not given to you sometimes we should bring the change. Thank you. Hi, this is me Lakshmi from Sikkim. Stay safe, stay home. It's Corona time. But stay safe, take care,
spend time with your family. And जो जति पनि छैन यहाँदेखि अब्रोडहरुतिर छ, you also take care, stay safe. This I know quarantine can be very scary. It's very difficult for people, but we all are in this together, and if we want to end this, we have to be together. We have to have each other's back and not step out. Stop following rumors and believe in whatever the actual website states. So yeah, believe in that, try in our own self growth, in our own self improvement, and yeah, stay at our houses for sure. Just step out when there is some essentials to grab. So yeah, that will be my message. And thanks to Joan for letting me do this video for his channel. And you can also find me in my channel. I have a YouTube channel as well named Sincerely Yours. So I'm an amateur, but yeah, you can definitely go and subscribe to my channel, because I try to bring real relatable content for you people, and I'm definitely sure you're gonna like it. So yeah, I'm Priyanka signing off. This thing is going to hunt us for the next 1 year or next couple of years, because we need to be safe. This is the main thing and main message. Be safe, stay safe, and think this is an end game. Like, we can put this whole together. We can fight against this pandemic. Nothing is going to ever last like this, so we can come back to our normal days. देना चाहती हूँ जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग घर पे रहेंगे तो इन जैसे कोरोना वायरसों का अच्छे से so stay at home, stay safe. Happy Holi. Stay safe. प्लीज़ हीरोपंती में बाहर नहीं जाने का, समझे भाई लोग बहन लोग. कभी कभार इट्स बेटर टू बी कॉशियस. आई नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अरे हमारे साथ होगा ही होगा, बट यू नेवर नो. शुड नॉट बी समवन जो फालतू के रिस्क लेने से बेटर है. कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी क्यों लेना, उड़ता हुआ तीर क्यों. गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो डोंट गो आउटसाइड, स्टे सेफ प्लीज़. कोई भी सामान को देखो, एक बैकअप सामान रखो. लाइक आई गॉट 2 मैगीज की, एक ख़त्म होगा, आई हैव अनदर. बाई चांस मुझे मार्केट में ना मिलेगा. लेकिन कभी कभार होता है कि तुम पैनिक में होर्डिंग कर लेते हो, लाइक 6-10 पैकेट खरीद लिया. प्लीज़ ऐसा मत करो, बिकॉज क्या पता किसी और को ज़रूरत हो, राइट? बेस्ट ऑफ लक राइडिंग दिस आउट. Let's pray all together for those who are infected, for their better health, and for those who passed away because of this coronavirus. I just hope that let's pray that may their soul rest in peace. अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि गभर्मेन्टले अर्डरहरू दिएको छ होइन, लेट्स ओबे. एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर चाहिँ हामी त्यसलाई ओबे गर्नु है, अनि फलो गरौँ त्यसलाई. स्टे होम, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, अनि लेट्स प्रे all together for the better. So lockdown को इतने दिन जा चुके हैं, so I tried my best to give you the experience of what people are facing right now, how they're living their life in some places like Sikkim, Darjeeling, Siliguri and Tamil Nadu, different states of our country. So I tried to bring some positivity to you guys. Okay guys, thank you so much for watching my video. So जितने भी लोगों ने इस वीडियो में हेल्प किया है, I would like to thank you guys for your help, for your initiative. And सबके Instagram links is on the description. उनके YouTube channel, someone like James and someone like Priyanka, उनके YouTube channel के link भी description में है. You can go and subscribe to them and you can show some love towards them. And I hope you liked the video. I know video बहुत लंबा था, but if you are still watching this, I would like to say thank you so much. As we all know, social media में बहुत सारे rumors आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे आ रही है जो which can kind of break your mind's peace. So ignore those things and especially pray for those people who are suffering from this disease. Pray for the people जो हमारी तरह privileged नहीं है, someone like daily wages workers जो अभी बहुत problem face कर रहे हैं हमारे country. Even if you can't donate for them, just pray for them. And if you haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe to my channel and don't forget to give a like and a positive comment. And stay in home, stay safe and stay united. Paka, paka, paka.